Starting with the most beneficial and greatest name of Almighty Allah, who has created the seven skies. Assalamu alaikum, dear students. This is me, Umar Farooq Sumro, subject teacher of English OPE, class 5. Dear students, I hope all of you are fine, as by the blessings of Almighty Allah and by the prayers of your parents and your elders. I must say before starting our today's lecture that I am very disappointed about previous lecture because no one completed the homework and no one submitted the homework on the group. Dear students, homework was given to you in previous lecture. It was that you have to read book page number 14 and this lesson complete and send it to your WhatsApp group, but no one completed that homework and I am very disappointed with you. Now what you have to do, you have to complete that homework in this lecture. Okay, you must submit 2 homeworks in 1 lecture. So first of all, we are going to start our lecture number 2 of unit 3, lesson 1, the show. Dear students, I am pointing out here a box that tells us about something in grammar and in language structure. First of all, it is vocabulary. What is vocabulary? Adjectives of damage. As you know, what is the meaning of the word damage? Okay, adjectives of damage describes means such adjectives that tell us about damage and uncontrollable things. And the examples are underlined for you here: torn, damaged, bent, or reduced. Okay, dear students, some examples of adjectives of damage are torn, damaged, bent, or reduced. I have underlined some words that defines adjectives of damage. And number 2, it is grammar. If I were you, I would advise past perfect. We will read in our book page number 15 in today's lecture, and we must start our lecture number 2 of lesson 1 unit 3 from page number 14. So first of all, I must repeat some main points from the lesson for you. That the lesson tells us that if we are going to buy something from shop, we must be very careful and conscious when we buy something from the shop. First of all, if you want to buy a joystick like Imran, you must see that if the page, if the box, if the joystick is not torn, if the box is not torn, or the corners of joystick or box is not bent, or it is not damaged from inside. आप जब भी कोई चीज़ शॉप करने जाएं, शॉपिंग पे जाएं, तो आपको सबसे पहले, जैसे यहाँ इमरान ने ध्यान नहीं रखा, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फॉर एग्जांपल इमरान की तरह आप भी एक जॉयस्टिक ख़रीद रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उसका बॉक्स देखना पड़ेगा. बॉक्स देखना पड़ेगा कि वो टॉर्न तो नहीं है, बेंट तो नहीं है, और इसके बाद जो आप चीज़ ले रहे हैं, यू मस्ट ऑपरेट दैट थिंग. ओके, आपको वही चीज़ ऑपरेट करनी पड़ेगी. इमरान मेड अ मिस्टेक इन द शॉप दैट ही चेक्ड एन अदर वन. What does he say? That Imran, not this one but an other like it. It is the biggest mistake of Imran because he did not check the thing that he was going to buy, but he checked an other thing like that. आप भी इस तरह की कभी गलती ना करें. अगर आपने जो चीज़ बाय करनी है तो आप चेक भी वही करेंगे. अगर आपको शॉपकीपर कहता है कि ये पैक्ड है, तो मैं आपको इसका सैम्पल पीस दूसरा दिखा देता हूँ जो वर्क करता है. सो डोंट बिलीव इन शॉपकीपर, उस पर यकीन न रखें. ट्राई टू चेक द थिंग दैट यू आर गोइंग टू बाय. आप जो चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं आप उसे ही चेक करेंगे. इट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक मेड बाय इमरान. इमरान ने ये सबसे बड़ी गलती की थी. एंड नाउ व्हेन यू हैव बॉट द थिंग और joystick, then try to get a receipt from the shopkeeper and also read the receipt very carefully. आपको शॉपकीपर से वो रिसिप्ट भी लेनी चाहिए, रसीद जिसको हम कहते हैं, जिस पे जो चीज़ हमने बाय की है उस पर टोटल उसकी समरी, उसकी अमाउंट, उसकी रियायत, उसकी डेट, स्टैम्प सब कंप्लीट यानी स्टेटमेंट मौजूद होते हैं.
तो आपने वो रिसिप्ट भी लेनी है ध्यान से और ध्यान से पढ़नी भी है. इफ़ अब यहाँ इनकी मदर क्या कहती है, मम्मी इट वॉज नॉट लेबल्ड डैमेज्ड गुड्स इन द शॉप वॉज इट. अब इमरान की मदर इनको कहती हैं कि क्या दुकान पे लिखा हुआ था कि डैमेज्ड सामान है, ख़राब सामान है. इमरान ने कहा नो इट वॉज ओनली लेबल्ड रिड्यूस्ड. ओके, सो आप जब भी वो चीज़ें ख़रीद करें तो फिर कीप इन रिमेंबर दैट आप जो चीज़ ख़रीद कर रहे हैं तो आप उसकी रिसिप्ट लें और ये भी देखें कि क्या अगर ये आप ले जाएं आपको पसंद ना आए तो क्या आप वापस कर सकते हैं शॉपकीपर को या इसके बदले आप अपने मनी वापस ले सकते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड and accumulate these small things whenever you are going to buy something from shops. Okay, and now we are going in our next activity number 3. The lesson has been completed. Now please try to read the lesson in, as I told you, in advanced English tone. Okay, so first of all it is book page number 14. Exercise or activity number 3, make up short dialogues using the given words and offers to help. In this activity we have been given 2 things to do. We are ordered to complete 2 things. We have to make short dialogues first and then using the given words and offers to help. Okay, for example, number 1, I have torn the leg of my trousers. Don't worry, I will mend it for you. आपने इस एक्टिविटी में 2 वर्क्स करने हैं. कितने? 2. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, शॉर्ट डायलॉग्स. डायलॉग्स हम किसे कहते हैं, यानी एक से ज़्यादा जुमलों को. एक से ज़्यादा अगर 2 जुमले हैं, इफ़ देयर आर 2 sentences of a person or 2 persons, we can call it dialogues or conversation. So हमें क्या करना है कि हमें शॉर्ट डायलॉग्स भी बनाने हैं और ऑफर्स टू हेल्प. जैसे कि अगर हमने कोई भी चीज़ तोड़ दी है या ख़राब कर दी है, वी मस्ट ट्राई टू रिकवर और रिपेयर इट. ओके, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ गिवन टू अस फॉर योर इजीनेस. आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू. फर्स्ट, आई हैव torn the leg of my trousers, and second sentence, don't worry, I'll mend it for you. And the words that are given to us are trousers, leg and torn. We must try to use these 3 words in our sentence as they are used in this example sentence. First of all, word torn is used, second leg, and third trousers. Okay, so we must try to make up a sentence from these given words and offers to help. Okay, we must try to get a solution of each problem. We have number 2. And now we have to complete the sentence. We have to make the sentence. It is plate and chipped. Number 3, shirt or blouse, arm or burnt. Number 4, lamp, arm bent. Number 5, photo frame, glass or scratched. Number 6, cup cracked. Okay, so first example is given to us for our easiness, and now we are going to make all these sentences. Okay, I am showing you complete picture of the sentences that I have made for you, dear students, that it would be very easy for you to understand. I have written here the complete activity, that make up short dialogues using the given words and offers to help. Okay, the first one, the sentence number 1 is, as it was given to an example, I have torn the leg of my trousers. Okay, and the words are given to us, trousers, leg, torn. And the other one says, don't worry, I'll mend it for you. Number 2, as it is given to us, plate or chipped, as I read before some moments. I have chipped this plate. I am so sorry. And don't worry, we can go shopping tomorrow and buy another one. The first sentence is made by the help of given words, chipped and plate, and we have to make a sentence that defines offers to help. Now it defines we can go shopping tomorrow and buy another one. Okay, number 3, it is shirt, blouse, arm or burnt. We don't have to use all these 4 words in a single sentence. If our sentence is made with 3 words from these, we can make. So it is, I have burnt the arm
on this shirt. Shirt and arm and burnt. We have not used word blouse in the sentence. So it is I have burnt the arm on this shirt. Don't worry, I will mend it for you. Okay. Number 4 sentence is limb, arm, bent. The words that are given to us to make a sentence are limb, arm and bent. So it is I have bent the arm of this lamb. So what would be the sentence of offer to help? The sentence would be that if I have bent the arm of this lamb, I can say don't worry, we can go shopping tomorrow and buy another one. I have made all these 4 sentences, and now it is for you a homework that you have to make sentences from these given words, number 5 and 6. Try to make up simple sentences. Don't make too many difficult sentences. You have to make just a single sentence of number 5 and a single sentence in number 6. Okay, this is a picture of all the examples of this activity shown on your screen. Kindly watch it carefully and clearly and try to submit your homework, attempt your homework very carefully. And as I told you in the beginning of the lecture, we have to read as vocabulary adjectives of damage that I have underlined and I have told you. And number 2, grammar. If I were you, I would advise past perfect. Okay, so here on book page number 15 we are going to read about giving advice, and if I were you, I would. It would be in past परफेक्ट. यहाँ हम जो एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं वो टोटल एडवाइस देने पर है. जैसे बुक पेज 14 पर अगर आप अपनी बुक्स ओपन करेंगे तो बुक पेज 14 पर इमरान की मदर लास्ट के पैराग्राफ में कहती हैं कि इफ़ आई वर यू आई वुड टेक इट बैक टू द शॉप. वो कहती हैं कि अगर इमरान को कहती हैं कि अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं ये चीज़ जाकर वापस कराती दुकान पे. ओके, इससे एडवाइस कहते हैं कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं गरीबों की मदद करता, या आप मेरी जगह होते तो आप भी उनके साथ हमदर्दी करते. अगर मेरी जगह हमज़ा होता तो हमज़ा भी मेरा होमवर्क लिख के दे देता. ये एडवाइस होती हैं और पास्ट परफेक्ट में हम सिर्फ़ और सिर्फ इन्हें यूज़ करेंगे. ओके, इनका स्ट्रक्चर फ़िलहाल जो है वो आपको बिल्कुल भी यानी ग्रामर के स्ट्रक्चर के तौर पर नहीं समझाया जाएगा, बिकॉज द लेवल इज़ टू हार्ड एंड अबव टू यू. आपके लेवल से ये चीज़ बहुत ऊपर है, पर आपको जैसे ये एक्टिविटी सिर्फ सेंटेंसेस के लिए दी गई है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस एक्टिविटी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इफ़ आई वर यू आई वुड एक्सचेंज इट और आई वुड नॉट यूज़ इट. अब यहाँ पर इमरान ने जो जॉयस्टिक बाय की है, अब ये उनकी मदर कहती हैं कि इफ़ आई वर यू, जैसे मैंने आपको इसकी मीनिंग बताई कि इफ़ आई वर यू यानी मैं आपकी जगह होती. उनकी मदर कह रही हैं इफ़ आई वर यू यानी मैं आप नहीं होते. ओके, इफ़ आई वर यू मीन्स अगर मैं आपकी जगह होती, आई वुड एक्सचेंज इट तो मैं इसे तब्दील करा लेती, और आई वुडेंट यूज़ इट या मैं इसे यूज़ ही न करती. इनकी मदर कहती हैं, या आई वुड एक्सचेंज इट और आई वुड नॉट यूज़ इट इफ़ आई वर यू. अब ये सारे एडवाइस में यूज़ होते हैं. अब आपको सिर्फ ये समझना है कि ये जो एक्टिविटी है, अब आप इसमें से क्या सिलेक्ट करेंगे कि इफ़ आई वर यू आई वुड एक्सचेंज इट और आई वुडेंट यूज़ इट. कि अगर आप इस जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप इसे एक्सचेंज कराते या आप इसे इस्तेमाल ही न करते? क्यों कि अगर आप एक्सचेंज कराते तो ही आपका बेनिफिट है, फ़ायदा है, और अगर आप इसे यूज़ नहीं करते सो इट इज़ द वेस्टेज ऑफ ऑल द मनी. तो ये पूरे पैसों का ज़ाया होना है. क्यों कि आपने पैसे खर्च किए हैं अपनी जॉयस्टिक या कोई भी ऐसी चीज़ शॉप से बाय करने के लिए. सो इफ़ यू डू नॉट यूज़ दैट थिंग इट विल बी वेस्ट इन पीसेस. वो बिल्कुल ज़ाया और ख़त्म हो जाएगी. तो इट वुड बी ईजी or good enough for you to select number 1 advice. If I were you, I would exchange it, not
I would not use it. आपको इसे एक्सचेंज करवा लेना चाहिए, न कि इसे अपने इस्तेमाल में न रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस्तेमाल ना भी करेंगे तो भी योर मनी विल नॉट बी रिटर्न टू यू. आपके पैसे तो आपके पास वापस आने नहीं, सो आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा. नाउ focus for a moment on activity number 3 on book page 15. It is a homework for you. I will try to complete number 1 example for you, and other 3 or 4 sentences will be homework for you. Okay, and it is second homework. First homework was you that you have to read book page number 14, okay, and send it on your WhatsApp group. So it is read the quiz and circle your answers. अच्छा, आपको भी ये एक्टिविटी में सिर्फ एडवाइस को ही फॉलो करना है. ओके, अब यहाँ पे हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल द सेंटेंस नंबर 1 टेल्स अस दैट इफ यू फाउंड अ लार्ज स्पाइडर इन द बाथरूम वुड यू, कि अगर आप बाथरूम में बड़ा स्पाइडर होता तो वुड यू, आप क्या करते. ट्राई टू कैच इट, किल इट और स्क्रीम, आप क्या करते कि उसे पकड़ने की कोशिश करते, मार देते या स्क्रीम कर देते. नाउ इट इज़ अपॉन यू, इट इज़ डिपेंडेड अपॉन यू. अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनमें से क्या आंसर सेलेक्ट करते हैं. क्या आप उसे कैच करेंगे, क्या आप उसे किल करेंगे, या आप वहीं स्क्रीम चिल्लाना शुरू कर देंगे. नंबर 2, इफ़ यू हैड अ स्कूल बुक विद द आंसर्स रिटन इन इट वुड यू, कि अगर आपके पास स्कूल की बुक होती जिसमें कंप्लीट आंसर्स लिखे होते तो आप क्या करते. इग्नोर द आंसर्स, कॉपी द आंसर्स, टेल यूर टीचर, कि क्या आप उन आंसर्स को इग्नोर कर देते यानी नज़रअंदाज कर देते, उन्हें अपने आंसर शीट में न लिखते, या आंसर शीट में कॉपी करते, या आप अपने टीचर को बताते. अब ये भी आप ही को सिलेक्ट करना है. ईच स्टूडेंट मस्ट सेलेक्ट बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ. Number 3, if you saw some money on the pavement, would you? Number A, leave it there, pick it up and keep it, and C, hand it to your parents. कि अगर आपको एक जगह पैसे मिल जाएंगे तो आप क्या करेंगे. आप उन्हें वहीं छोड़ देंगे पैसों को, या आप उठाकर अपने खुद रख लेंगे, या आप अपने पेरेंट्स को दे देंगे. Number 4, it is if there was a match on TV late at night would you, अगर टीवी पे रात को देर तक क्रिकेट मैच होता, देर तक रात को, आप क्या करते. आस्क मॉम टू रिकॉर्ड इट, वॉच इट और टू गो बैक एट द यूजुअल टाइम, आप क्या करते. अपनी मम्मा को कहते हैं कि वो रिकॉर्ड कर लें ये मैच, या आप वो देखते, या आप अपने जो मुकर्रर टाइम है उस पर सो जाते. एंड सेंटेंस नंबर 4, it is if you felt faint in the street on a hot day would you. faint means बेहोशी की हालत होना या बेहोश होना, चक्कर आ जाना, इससे हम फेंट कहते हैं. ओके, चक्कर आ जाते हैं ना गर्मी में बहुत बार, सो इट इज़ कॉल्ड फेंटिंग, चक्कर आ जाना. ओके, इफ़ यू फेल्ट इन द स्ट्रीट ऑन अ हॉट डे वुड यू, कि अगर आप समर के डेज में, गर्म दिनों में रोड पे चलते हुए आपको चक्कर आ गए तो व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे. वुड यू गो होम क्विकली, आप जल्दी से घर चले जाएंगे. रेस्ट इन द शेड, या कहीं साए में ठहर जाएंगे, या कंटिन्यू वॉकिंग, या चलते रहेंगे, आप क्या करेंगे. आई हैव टोल्ड यू कंप्लीट मीनिंग ऑफ ऑल दीज 5 sentences and their choices. Now you have to read this activity number 3 and try to circle your own answer. You don't have to copy from others, you must tell your own answer in your own words. Okay, so the homework was you have to read book page number 14 and submit your homework on WhatsApp group and make sentences from activity number 3 book page number 14 and sentence number 5 and 6, and book page number 15 activity number 3 read the quiz and circle your answers. Dear students, our today's lecture ends here. We will meet inshallah in our upcoming lecture. Still give me permission to end this lecture here. Allah Hafiz.